I hope you all are fine. So welcome back to my physics class. This is Sonali and you are watching your YouTube channel जिसका नाम है Physics the Friction of Minds. So friends, in order to understand the physics, in order to understand the subject, just stay tuned with the channel and just subscribe the channel if you have not yet subscribed, so that you will be notified with all the recently uploaded videos for the physics of a 12th board. Okay. So friends, currently we are dealing with a chapter जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई. ओके, सो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर से, कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पे वर्क किया. सो लास्ट लेक्चर्स में हमने बोर्स का एटॉमिक मॉडल देखा था, दैट वाज द लास्ट मॉडल फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर. ओके, एंड हमने देखा कि कैसे बोर्स ने अपने 3 पोस्टुलेट्स के थ्रू रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो भी डिफिकल्टीज थी वो सारी डिफिकल्टीज क्या कर दी, ओवरकम कर दी. ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बोर्स के जो 3 पोस्टुलेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, उसके बाद रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उनका कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इट एमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ कंटिन्यूअसली वेरिंग फ्रीक्वेंसी, और करके रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो रेडिएशन से एमिट हो रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. इट इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. बट एक्सपेरिमेंटली जब ये स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया गया थ्रू एनी प्रिज्म और एल्स, सो दे गॉट टू ऑब्जर्व that spectra does not consist of all the radiations of all frequencies. It consists of radiations of few frequencies only. Okay, and that's why जो spectra मिला वो continuous ना होके वो spectra कैसा था, line spectra, और this is also called as discrete spectra. Okay, so this line spectra could not be explained by Rutherford's atomic model जिसका बेसिस था क्लासिकल थ्योरी. ओके, तो फिर नील्स बोर आए और नील्स बोर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट के थ्रू ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है इसे एक्सप्लेन किया था बाय टेकिंग हाइड्रोजन एटम. So he has taken a hydrogen gas and he has just poured that hydrogen gas in an evacuated tube and strong electric field provide किया, फिर उसे हीट किया, तो क्या हुआ, जो स्पेक्ट्रा इमिट हुआ उस स्पेक्ट्रा को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो वो कंटिन्यूअस ना होके लाइन स्पेक्ट्रा था. ठीक है, मतलब जो रेडिएशंस थे वो सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के थे, नॉट ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. ओके, एंड दैट्स व्हाई ये जो लाइन स्पेक्ट्रा था, दिस लाइन स्पेक्ट्रा has been explained by Niels Bohr by using his third postulate. Okay, so this was the success of Niels Bohr's atomic model, that he could explain the line spectra of hydrogen atom. Okay, but as we all know that each coin has the 2 sides. Along with the success of Bohr's atomic model, there were some limitations of Bohr's atomic model. So in this lecture we are going to discuss the limitations of Bohr's atomic model. Okay, so Bohr's atomic model का जो पहला limitation था वो ये था कि Bohr's का जो एटॉमिक मॉडल है उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया, बट व्हाट अबाउट अदर एटम्स, बिकॉज प्रैक्टिकल फैक्ट तो यही थे कि हाइड्रोजन एटम ही नहीं तो अदर एटम भी जो स्पेक्ट्रा इमिट करते हैं वो कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है या फिर लाइन स्पेक्ट्रा होता है. ओके, बट बोर्स के जो एटॉमिक मॉडल ने लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया, इट वाज ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम, एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल इज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन line spectra of atoms other than hydrogen atom. ओके, बिकॉज हर एटम अपना एक स्पेक्ट्रा इमिट करेगा जो कि लाइन स्पेक्ट्रा होगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा होगा. ओके, बट बोर्स के एटॉमिक मॉडल ने सिंपली क्या किया, हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रा था उसे एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग हिज थर्ड पोस्टुलेट. बट व्हाट अबाउट अदर एटम, सो दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एटम. दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड लिमिटेशन, तो बोर के पोस्टुलेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. सो अगर आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे होगे तो सबसे पहले बोर्स के पोस्टुलेट्स पढ़ लो.
अदरवाइज आपको उनके लिमिटेशन समझ में नहीं आएंगे. ओके, सो आपको याद होगा बोहर से अपने सेकेंड पोस्टुलेट में क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, व्हाट इज दैट, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वहां पे n क्या होगा, इंटीजर हैविंग वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, सो दिस n is called as orbit number, n is called as orbit number, or else this is also called as principal quantum number. ओके, सो ये सब कुछ हमने बोर्स के पोस्टुलेट्स में डिस्कस किया है. यहाँ पे हमें लिमिटेशंस डिस्कस करना है. सो बोहर का जो सेकेंड लिमिटेशन है, इट वाज रिलेटेड टू द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स. व्हाट इज दैट, बोहर ने अपने सेकेंड पोस्टुलेट में ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, those electron will revolve in a stable orbit, and that stable orbit is called as a Bohr's orbit. And if those electrons are revolving in a stable orbit, so जो electrons इस stable orbit में revolve होंगे, it will not emit, those will not emit electromagnetic radiation. ओके, सो ये था बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट कि उन्होंने ऑर्बिट की स्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन की थी बाय गिविंग हिज सेकेंड पोस्टुलेट. ही स्टेटेड दैट, what he stated, if the angular momentum of electron is equals to nh upon 2 pi, then those electrons will revolve in a fixed specific orbit. That orbit is called as a stable orbit, or it is also called as a Bohr's orbit. और जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व होंगे, it will not emit any electromagnetic radiation. Okay, so this is the Bohr second postulate as we all know. But ये जो सेकेंड पोस्टुलेट दिया गया, इसे कोई थ्योरेटिकल सपोर्ट नहीं था, बस ये पोस्टुलेट दिया गया, बट देयर वर नो थ्योरेटिकल प्रूफ फॉर दिस सेकेंड पोस्टुलेट, एंड दिस इज द बोहर्स सेकेंड लिमिटेशन. सो व्हाट इज दैट, ऑन थ्योरेटिकल साइड ऑल्सो, अगर हम थ्योरेटिकल साइड की भी बात करें, सो ऑन थ्योरेटिकल साइड ऑल्सो बोहर्स model was not entirely satisfactory. It was not entirely satisfactory as its arbitrary assumed orbits following some condition to be stable. So this is Bohr's second limitation. What is that? कि सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एमिट नहीं करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन NH अपॉन 2 पाई, जिन इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई है, वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में फिरेंगे, ऐसा कहा था बोहर्स ने. बट ये जो कंडीशन थी उसे कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था, एंड दैट्स व्हाई on theoretical side also this model was not entirely satisfactory as its arbitrary assumed orbit, that those stable orbits are called as arbitrary assumed orbits following some condition means this condition NH upon 2 pi, okay, to be stable. Okay, so बोर्स ने तो उन ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट कहा था, बट वो जो स्टेबल ऑर्बिट है उसे कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था. ओके, सो ये था बोहर का सेकेंड लिमिटेशंस. ओके, एंड अगेन देयर इज वन मोर लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एंड इज दैट कि बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या कर रहा है, लाइन स्पेक्ट्रा एमिट कर रहा है. क्या कर रहा है, लाइन स्पेक्ट्रा एमिट कर रहा है. और जो लाइन्स एमिट होगी, दोज लाइन्स आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, दोज लाइन्स आर कॉल्ड एज एमिशन लाइन्स. ओके, सो जब ये एमिशन लाइन्स की इंटेंसिटी ऑब्जर्व की गई, सो ईच एमिशन लाइन फॉर द सेम एटम जो विच इज एमिटिंग द लाइन स्पेक्ट्रा, when he has observed the intensity of this emission line, then he found that the intensity of each emission line is found to be different. Okay,
सो सेम एटम में से जो स्पेक्ट्रा इमिट हो रहा है, तो हर स्पेक्ट्रा की जो लाइंस है जिसे हम कहते हैं एमिशन लाइंस, उनकी इंटेंसिटी जब ऑब्जर्व की गई, सो ईच लाइन विल इज हैविंग अ डिफरेंट इंटेंसिटी। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी बोहर्स का एटॉमिक मॉडल नहीं दे पाया कि जो स्पेक्ट्रा इमिट हो रहा है, जो एमिशन लाइंस है, why it is of varying intensity. So this is Bohr's third limitation. What is that? Intensity of each emission line. Each emission line seem to differ from line to line. Line to line, and it could not be explained. It could not be explained by Bohr's atomic model. By Bohr's atomic model. Okay? So जैसे ही एमिशन लाइन चेंज हो रही है, सेम स्पेक्ट्रा की जो एमिशन लाइन चेंज हो रही है, तो उसके साथ उसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है, बट सोर्स तो एक ही है, एटम तो एक ही है, हाइड्रोजन एटम। सो व्हाई ईच एमिशन लाइन इज ऑफ वैरिंग इंटेंसिटी, इसका एक्सप्लेनेशन भी बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो नहीं दे पाया। ओके, सो दिस आर 3 लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसमें का ये जो सेकेंड लिमिटेशन है, या फिर ठीक है, बोहर्स के एटॉमिक मॉडल ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को तो एक्सप्लेन किया, बट स्टिल ये सारे लिमिटेशंस अगर हम ध्यान में रखें, इसका मतलब बोहर्स का एटॉमिक मॉडल भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर सेटिस्फैक्टरीली, वी नीड टू गो थ्रू द क्वांटम थियोरी। हमें क्वांटम फिजिक्स स्टडी करना होगा, विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बट स्टिल ये सेकेंड लिमिटेशन जो है बोहर्स के एटॉमिक मॉडल का, the second limitation that it could not give the theoretical support to the second postulate दिया, but उसके पीछे theoretical proof नहीं दिया था बोहर्स ने, तो उसका explanation दिया de-Broglie ने। So now we'll see how de-Broglie has given a reasoning behind the second postulate of Bohr's, कि de-Broglie ने किस तरह से बोहर्स के second postulate को क्या दिया, एक theoretical proof दिया, एक theoretical support दिया। तो now we'll see the de-Broglie explanation or the de-Broglie reasoning for the Bohr's second postulate. Okay, so let's see the de-Broglie explanation over the Bohr's second postulate। कि बोहर्स ने second postulate में ये तो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा, वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व होंगे और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है, बट ये जो बोहर ने अपना सेकेंड पॉस्टुलेट दिया, दिस L इज इक्वल्स टू NH/2π, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ बोहर के पास नहीं था, उन्होंने जस्ट पॉस्टुलेट स्टेट किया, बट देयर वर नो थ्योरेटिकल प्रूफ। सो द थ्योरेटिकल प्रूफ टू दिस बोहर सेकेंड पॉस्टुलेट हैज बीन गिवन बाय de-Broglie। सो लेट्स सी द de-Broglie एक्सप्लेनेशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू de-Broglie का हाइपोथेसिस हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में स्टडी किया है। सो अगर आपको वो नहीं पता है तो पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आप स्टडी कीजिए। ठीक है, सो de-Broglie के अकॉर्डिंग क्या था, एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल has wave associated with it। de-Broglie ने अपने हाइपोथेसिस में बताया था कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर या फिर मटेरियलिस्टिक पार्टिकल नेचर तो शो करता ही है क्योंकि वो पार्टिकल है, पर जो वो मूविंग पार्टिकल क्या होगा, जब वो पार्टिकल मूव होगा तो उसके साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएट की हुई होगी। ठीक है, उस वेव की वेवलेंथ भी हमने देखी थी h/p और h/mv, जिसे हमने कहा था de-Broglie वेवलेंथ, और इस एसोसिएटेड वेव को हमने कहा था मैटर वेव। ठीक है, सो ये था हमारा de-Broglie हाइपोथेसिस। तो de-Broglie ने अपने एक्सप्लेनेशन में उनका हाइपोथेसिस यूज किया। कैसे, तो अब de-Broglie ने कहा कि ये जो आपका न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है,
So instead of treating this electron as a particle, what I said, instead of, this is very important, instead of treating this revolving electron as particle, we should treat it as wave. Okay, we should treat it as wave, because de-Broglie के अकॉर्डिंग तो ये था ही ना कि हर मूविंग पार्टिकल क्या करता है, अपने साथ एक वेव एसोसिएट करता है. तो de-Broglie ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल कंसीडर ना करके क्या कंसीडर करते हैं, वेव. ओके, बट दूसरा क्वेश्चन तो ये भी था कि स्टेबल और बोर्स के अकॉर्डिंग स्टेबल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, एनर्जी लॉस नहीं करते. तो इस पे भी बोर ने एक्सप्लेनेशन दिया कि जस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रीटिंग इट एज अ वेव, जस्ट ट्रीट इट एज अ स्टैंडिंग वेव, just treat it as a standing wave, because we know that when standing waves are formed in a medium, जब कोई भी मीडियम में स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होती है इस तरह से, so there is no propagation of energy, there is no propagation or transfer of energy from one particle to another in a medium takes place. Okay, so ये भी जो पॉइंट था वो de-Broglie ने एक्सप्लेन कर दिया कि बोहर क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे. तो de-Broglie ने उस पर भी कह दिया कि इस इलेक्ट्रॉन को तुम एज अ वेव तो ट्रीट करो, बट कौन सी वेव ट्रीट करो, स्टैंडिंग वेव, बिकॉज स्टैंडिंग वेव व्हेन द स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. ओके, सो वो भी कंडीशन थी, वो सेटिस्फाई हो गई. ओके, उसके बाद अभी de-Broglie ने कहा कि अब जो कंडीशन दी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही स्टेटेड दैट लेंथ of orbit of electron is equals to integral multiple of its wavelength. Okay, so this is one statement given by de-Broglie. और इस स्टेटमेंट ने क्या किया, बोर्स के सेकेंड पोस्टुलेट को प्रूफ कर दिया. वो देखो कैसे, पहले स्टेटमेंट का मीनिंग समझ के लो. अगर ये न्यूक्लियस है आपका, सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बी डिनोटेड बाय r1, एंड सपोज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, सो व्हाट इज स्टेटेड, लेंथ ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इस ऑर्बिट की रेडियस अगर r1 है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई r1. Length of orbit is nothing but length of circle, and length of circle is nothing but circumference of circle. So for the radius r1, circumference कितना हो जाएगा, 2 pi r1. So length of orbit of electron is equals to what? Is equals to integral multiple of its wavelength. Okay? So first orbit में wavelength होगी lambda 1. Okay? If we are considering second orbit, suppose अब हमने second orbit consider की, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिसकी रेडियस है r2. सो सेम स्टेटमेंट अगर आप सेकेंड ऑर्बिट के लिए लगाओगे तो कैसे होगा, लेंथ ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ de-Broglie वेवलेंथ. नाउ एज यू आर कंसीडरिंग सेकेंड ऑर्बिट, सो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ de-Broglie वेवलेंथ. ओके, सिमिलर वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड ऑर्बिट, ओके, जिसकी रेडियस है r3, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, so again stated length of orbit of electron, so I can say 2 pi r3 is equals to integral multiple of its wavelength. So for the third orbit integer will be 3, so this is 3 times of lambda 3. Okay, so I hope you got the meaning of this statement. Okay, so in general if we consider nth orbit, okay, then what we write, for the nth orbit he has stated that same formula अगर हम nth orbit के लिए लगाए, ये nth orbit है जिसकी रेडियस क्या है, rn. ओके, सो लेंथ ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट की लेंथ कितनी होगी, सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई rn is equals to what, integral multiple of its wavelength. Now for the nth orbit integer will be n and wavelength is lambda n. So this is the mathematical
interpretation of this statement given by de-Broglie. Now you can apply this statement for any orbit, first, second, third up to nth. So in general we are talking for the nth orbit. Okay, so I hope you got it. Okay, then what is stated? अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल ना होके आप इसे क्या कंसिडर करो, आप इसे स्टैंडिंग वेव कंसिडर करो. सो उसका कहना ये था कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इस ऑर्बिट में मूव होगा तो यहाँ पे क्या होगी, स्टैंडिंग वेव्स एसोसिएट की भी होगी. ओके, एंड नाउ हियर सपोज हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें अभी. ठीक है, सो फोर्थ ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ कितनी होगी, स्टैंडिंग वेव्स कितनी फॉर्म होगी, 4 स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होगी. सो यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम लाइक दिस, बिकॉज यू नो दैट the length of orbit of electron is equals to integral multiple of its wavelength. So if you are taking a fourth orbit, okay, then how many standing waves will be formed? 4 standing waves will be formed, because as you are taking nth orbit, n number of standing waves are there. Okay, so you can draw a diagram for fourth orbit as like this. See, you know the diagram for the standing wave. Standing wave इस तरह से होती है. Okay, this is standing wave. So see how will be this standing wave. It will be like this. It will be like this. Okay, and then so this is a diagram for the standing waves which are associated with the electron which is moving in the fourth Bohr's orbit, fourth stable orbit. Okay, you can count this. This is 1, 2, 3 and 4. So for the fourth orbit, the wavelength will be 4. Okay, so this is the simple diagram. You can draw it for the first orbit, second orbit, but if you are taking nth orbit, then it is not possible to draw, because n numbers, n जो है वो कितना भी हो सकता है, 100,000 and all. Okay, so this is, let this be question number 1. So from this lambda n कितना हो जाएगा, it will be 2 pi rn upon n. Okay, so let this be equation number 2. Okay, अब देखो बोर ने कैसे इस इक्वेशन को, de-Broglie ने कैसे इस इक्वेशन को प्रूफ किया. ओके, सो ये हम इक्वेशन ऊपर लिख देते हैं. व्हाट इज दैट, 2 pi rn is equals to n lambda n. So I can write lambda n is equals to what, 2 pi rn upon n. Okay, so इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1. Okay, now you better know the de-Broglie hypothesis. अब de-Broglie ने एक्सप्लेन किया है तो उन्होंने ऑब्वियसली अपने हाइपोथेसिस का ही तो यूज किया है. So according to de-Broglie hypothesis, every moving particle has a wave associated with it. So this moving electron has a wave associated with it, which is called as a standing wave. Okay, so and the wavelength of wave is decided by the in which orbit the electron is moving. Okay, so according to de-Broglie hypothesis, that wave, the wavelength of that wave is given by, so as in general we are considering nth orbit, so we'll write as a lambda n, and the diagram is for the fourth orbit. Okay, so lambda n is equals to what, h upon p. ये general formula था, so instead of writing p we will write pn. Okay, where pn is the linear momentum of electron in that nth orbit. So let this be equation number 2. Now you observe equation 1 and 2, left hand side is same, so just equate the right hand side. So I can write h upon pn is equals to 2 pi rn upon n. Okay, so from this if I write the value of pn, तो ये क्या हो जाएगा, nh. This will be nh upon 2 pi rn. Let this be next equation number 3. Okay, ये तो हमें मिला लीनियर मोमेंटम, बट हमें बोर्स के सेकेंड पोस्टुलेट में क्या प्रूफ करना था, L is equals to nh upon 2 pi. L होता है एंगुलर मोमेंटम. So now I can say angular momentum of this revolving electron in nth Bohr's orbit, will be. Okay, so now let's see. Angular momentum is denoted by n.
for the nth orbit it will be ln. Okay, अब आपको पता है in general angular momentum क्या होता है? It's a moment of linear momentum, that means r into p. Okay, so I can write this as rn pn. Okay, so ln equals to rn into pn. This is the formula of angular momentum. Now you have the value of pn from equation 3, just substitute it. So keep this rn as it is and pn की वैल्यू कितनी है? nh upon 2 pi rn. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये rn कैंसिल हो गया and you will get here ln is equals to this nh upon 2 pi where n equals to what? 1, 2, 3 up to so on. It's simply what? It's a integer. And now you observe this equation. Let this be equation number 4. And you observe equation number 4. What is that? This is the Bohr second postulate. ये हमने यहाँ पे लिख के भी रखा था. That if the angular momentum of revolving electron in any orbit, so we are taking nth orbit, is equals to what? Integral multiple of h upon 2 pi. So for the nth orbit, integer will be n. For the first orbit, integer will be 1 and so on, right? So this way, यही था हमारा बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट. बट बोर ने तो सिंपली सिर्फ पोस्टुलेट दे दिया था, उसे एक्सप्लेन नहीं किया था. तो वो एक्सप्लेनेशन किसने दिया? de-Broglie ने, by using his hypothesis. And the hypothesis is very simple, that every moving material particle has a wave associated with it. उस वेव को उन्होंने कहा स्टैंडिंग वेव. एंड स्टैंडिंग वेव व्हेन फॉर्म इट डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी. ओके, सो बोर की जो कंडीशन थी स्टेबल ऑर्बिट की वो भी सेटिस्फाई हो गई और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था बोर्स ने सेकेंड पोस्टुलेट के लिए वो भी प्रूफ कर दिया de-Broglie ने. ठीक है, सो दिस वे इफ यू विल ट्रीट दिस revolving electron in any stable orbit as a standing wave, then it is possible to give a theoretical support to this Bohr's second postulate, and it is given by de-Broglie. Okay, so इस तरह से एक जो लिमिटेशन था बोर का, okay, वो de-Broglie ने अपने हाइपोथेसिस से क्या कर दिया? ओवरकम कर दिया. ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ बोहर सेकेंड पोस्टुलेट. देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है दैट give the de-Broglie explanation or give the de-Broglie's proof for the Bohr second postulate. So this is simple proof. Hardly 1 page का proof है और mathematical step just 3 to 4 steps है. Okay, ये equation important है और ये equation कैसे लिखा? वो जो statement बोहर ने दिया था. Okay, so remember this. This is de-Broglie hypothesis. Just equate this two equation. You will get this. Then use the formula of angular momentum and just solve it. Okay, so this is all about limitations of Bohr's atomic model and de-Broglie explanation over the Bohr second postulate. Okay, so I hope you understood it. If you come across any difficulty, just ask in a comment section. Okay, so next lecture में मिलेंगे next point के साथ. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.